हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप एक्सटेंडेड लॉकडाउन से ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आए होंगे बिकॉज आई हैव सीन माय डियर स्टूडेंट्स डूइंग बेनिफिशियल एक्टिविटीज़। बहुत अच्छी आपकी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। Guys, it's not necessary that to do some useful activity you have to be associated with home science group. जैसे आप देख रहे हैं होम साइंस की लड़कियां ज्यादातर आजकल डाल रही हैं। यू कैन डू, एवरीबडी अमंग यू कैन डू। देखिए कितना अच्छा आपको मौका मिला है। लॉकडाउन हैज बीन सो मच इफेक्टिव टू यू कि आप लोग घर पे बैठ के एटलीस्ट कंप्यूटर यूज करना सीख रहे हैं, इंटरनेट यूज करना सीख रहे हैं पॉजिटिवली। अदरवाइज आप लोगों के गॉसिप के लिए था, एंटरटेनमेंट के लिए जस्ट था, लेकिन अब आप देख रहे हैं हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर योर स्टडीज इवन। ओके, आई नो दैट इंटरनेट स्पीड हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय आवर गवर्नमेंट। हम लोगों को थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। Why don't you write? I suggest you write some essay on how this pandemic or COVID-19 has been beneficial to me and my family. कोई essay लिखें, कोई short story लिखें। जरूरी नहीं आप ट्रेजेडी लिखें, कोई कहाँ पे कौन मरा, ये हुआ, यहाँ पे हॉरर फैला हुआ। नो, कोई पॉजिटिविटी लिखें, how it has brought family together। ये चीजें वेल बड़ा कुछ है लिखने को। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेट अस कम टू द टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू रीड another poem, One Autumn Came, which is written by Ahmed and translated into English by Nomi Lazard. Why translated by him? Because the poem in fact was written by Ahmed in Urdu. Yes guys, you might have heard Ahmed's name in recent days, recent months I think. आपने देखा होगा जब सीए बिल पास हुआ, उसके बाद एंटी सीए रैलीज चली, यूनिवर्सिटीज में चली। आप लोगों ने देखा डीयू में, जामिया में, अलीगढ़ में नेट भरा पड़ा था। एक गजल जो थी फैज की काफी वायरल हो रही थी, बच्चे हर जगह पढ़ रहे थे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। यू माइट हैव हर्ड, यस इट वाज फैज अहमद फैज। सो गाइज, Faiz in fact was a revolutionary poet who participated in Indian liberation movement. अगर आप में से कुछ बच्चों ने 10th तक उर्दू वगैरह पढ़ी होगी, आपने फैज की काफी गजलें भी पढ़ी होंगी। So this poem, in fact, poem which we are going to read today is When Autumn Came by Faiz Ahmed Faiz. When Autumn Came is a wonderful poem which encompasses the longing of all mankind for new life. Okay? Let us go first for the introduction of the poem. The poem is written by Faiz Ahmed Faiz and translated by Nomi Lazard in English. Born in Sialkot, Faiz Ahmed Faiz was known as revolutionary Urdu poet who participated in Indian Liberation Movement. Indian Liberation Movement कौन सा था? जब 1947 में from British clutches India को freedom मिला. Okay? In this poem, the poet tries to give a vivid means clear description of autumn season. Poet tells how autumn came and affected trees and birds. So guys, I have told you that this poem, When Autumn Came, from the very title you can make image it is about autumn. Autumn क्या होता है? It is one of the season. You know, here in Jammu and Kashmir we are having 4 clear season. Air starts with that winter, harsh winter. Then comes beautiful spring, greenery everywhere, which is the symbolism of, it symbolizes hope. It is a symbol of hope and regeneration. Then comes summer. Okay, scorching heat. बहुत ज़्यादा तपती हुई गर्मियाँ आती हैं. And after that, we met autumn season. So autumn season, आप क्या बोलते हैं इसको? So many poets across the world have written poetry with respect to autumn season. John Keats का आपने सुना होगा. Have you ever heard John Keats?
ही डाइड वेरी यंग इन फैक्ट। जॉन कीट्स ने ऑटम लिखी है जिसमें उसने बहुत ज्यादा प्रेज करी है ऑटम सीजन की, बिकॉज हम लोग ज्यादातर सोचते हैं कि ओनली स्प्रिंग सीजन इज ब्यूटिफुल, बट ऑटम इज हैविंग इट्स ओन ब्यूटीज। अगर आप कभी मौका मिले जॉन कीट्स की ऑटम पढ़ने का, आप देखेंगे कितना उसने फ्रूटफुल सीजन इसको बोला है, बिकॉज फार्मर्स आर gaining in this season. They get their reward for their hardships only in this season. फसलें कटती हैं, कितना खूबसूरत उसने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है कि जब वो एप्पल्स जो है उनकी हार्वेस्टिंग होती है विद द सेंट ऑफ एप्पल्स जो है उसे नींद आने लगती है। देन कुछ एप्पल्स जो ब्रूस्ड होते हैं वो एप्पल साइडर की तरफ जाते हैं। सो ही हैज गिवन too much beauty to this season, we can say. अब फैज अहमद फैज की पोइम को जब हम पढ़ते हैं ऑटम कैंप, यहाँ पे लेकिन हमें कुछ और देखने को मिलता है। थ्रू दिस पोएम विच इज इन फैक्ट अ मेटाफोरिकल पोएम, जहाँ ज्यादा सिंबॉलिक पोएम इट इज, ज्यादातर इसमें मेटाफर्स का यूज हुआ है, इमेजरीज का यूज हुआ, सो मेनी पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड। इस पोएम के जरिए फैज अहमद फैज ने हमें ये बताया हुआ है कि हाउ द मोनार्क्स और क्रूअल किंग्स or enslaving those who are in fact under their ruling, जो उनके अंडर होते हैं, who are downtrodden या जो भी maybe minority or something like that. So this poem may be considered as metaphor of human life, and autumn may be considered as a phase in human life. Why metaphor of human life? Because I have told you earlier, autumn season जो है, it can be clearly depicted. It can be said that autumn season जो है इसमें पत्ते झड़ते हैं। आपने देखा होगा हर तरफ एक अजीब सा ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर छाया हुआ होता, मायूसी सी, उदासी सी, डस्ट उठती है हर तरफ से, पौधों के पत्ते झड़ते हैं और उसके बाद जब पत्ते झड़ते हैं तो पौधे नंगे नंगे से दिखते हैं, अजीब से दिखते हैं, वो ग्रीनरी अब दिखने को नहीं मिलती, हर तरफ उदासी और मायूसी छाई हुई होती है। तो ये सीजन को पोइट ने क्रूअल सीजन बताया हुआ, एक जालिम सीजन बताया हुआ है। इसको पर्सोनिफाई किया गया है विद अ क्रूअल किंग, एक जालिम मोनार्क के साथ, किंग के साथ, जो अपनी फोर्स को यूज करके इस सीजन की ब्यूटी छीन लेता है। Maybe somewhere when you will read a poem, you can make so many concepts. आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि how it has been related to the history of African history को ले लें, या अगर आप कहीं देख सकते हैं अपने आसपास जो भी, जहाँ इन इवन प्रेजेंट वर्ल्ड बहुत सारी जगहों पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो मतलब कुछ गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पे लोगों को, या गवर्नमेंट्स हैं या लोग हैं या किंग्स हैं जहाँ पे लोगों को सताया जा रहा है, उन पे जुल्म किया जा रहा है। सो दिस पोएम इज अ सिंबॉलिक पोएम, I can say metaphors has been used. Now let us read poem. I will read poem line wise, and you see, this is the way autumn came to the trees. It stripped down to the skin. Sorry, I have not written word them here. It's in fact them. आप देख लेना. This is the way autumn came to the trees. It stripped them down to the skin, left their ebony bodies naked. It shook out their hearts, the yellow leaves, scattered them over the ground. Anyone could trample them out of shape, undisturbed by a single moan of protest. So, dear students, you have seen I have read first stanza of the poem, which comprises probably of 7 lines. So we can say I have read line 1 to line 7. ये जो इस लाइन में मैंने पढ़ा, क्या देखा आपने? You can see the image there also I have made of autumn.
जो ट्रीज पे देखो जर्द रंग के पत्ते हैं. And poet has here talked about yellow leaves also. In these lines, the poet shows autumn making its appearance as harsh, aggressive, and cruel monarch. A ruler who uses violence or force to strip the leaves of the branches of the tree. यानी कि ऑटम जो है इसको पोइट ने कैसे प्रेजेंट किया हुआ है, एक क्रूअल किंग की तरह. जैसे ऑटम एक क्रूअल किंग जो है वो क्या करता, आपने बचपन में कहानियां सुनी हुई होंगी फ्रॉम योर ग्रैनीज. यू माइट हैव हर्ड सो मेनी स्टोरीज ऑफ द किंग्स. जब वो उनके जो सिपाही थे वो किंग के पास किसी मजलूम या किसी फरियादी को लेके जाते थे, उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते थे. एंड यू माइट हैव seen this thing in the pictures or so many serials across the world. You might have seen कि कैसे जब किसी पे जुल्म करता है कोई, तो उनके कपड़े तक उतार दिए जाते हैं, उन्हें कितना जदुकोब किया जाता है, कितना पीटा जाता है. So writer has compared this season with the cruel king. So we can say metaphor has been used because इस पोम के थ्रू राइटर ने जो है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस पोम के थ्रू राइटर ने सिर्फ ऑटम सीजन को नहीं बताया हुआ, बल्कि इस पोम के थ्रू उसने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से मोनार्क्स और क्रूअल रूलर्स और किंग्स जो है अपने अवाम को, अपने लोगों को, अपनी रियाया को तंग करते हैं, उन पे जुल्म करते हैं, उन लोगों की आवाजों को दबा देते हैं जो उनसे कहीं ना कहीं अपने लिए लिबरेशन मांगते हैं, आजादी मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं, इंसाफ मांगते हैं. तो ये सारा बताने की कोशिश की है फैज अहमद फैज ने थ्रू दिस सीजन. सो ही हैज सीन दैट monarch or ruler or the cruel king who uses violence, जैसे वो violence use करता और and force to strip the leaves of the branches of the tree. Strip क्या होता है? To remove. लेकिन remove कोई प्यार से नहीं remove करता है, forcefully with violence. जबरदस्ती, जिस तरह से वो जबरदस्ती उनके कपड़े उतार के फाड़ देते हैं, इसी तरह से ये मौसम जो है जबरदस्ती पौधे से उसके पत्ते छीन लेता है. कोई बंदा नहीं चाहेगा कि उसके कपड़े उतार दिए जाएं, उसे नंगा कर दिया जाए. सो कौन सा पेड़ ऐसा चाहेगा कि उसकी ब्यूटी को टर्न किया जाए, उसको टेयर किया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए. लेकिन दिस सीजन इज क्रूअल इन फैक्ट. ओके, नेक्स्ट, with the onset of autumn, the leaves turn green to yellow. You know, first they are green, then they turn to yellow. Okay? And one by one falls to the ground. The first can be also a metaphor which describes how heart, soul, and the body of human beings are torn apart by the destructive forces. So यहाँ पे metaphor use हुआ है फर्स्ट लाइन में. फर्स्ट लाइन इनफैक्ट कुछ में ये टाइपिंग एरर्स हैं. फर्स्ट लाइन here I have to use. Okay, ebony bodies can be a metaphor to describe how human beings have been treated as slaves. If you go through history, you will see कि African जो थे, they were enslaved by so many dynasties, Egyptians, Arabs, Americans. So black Africans जो थे, they were being ruled by them. उनके राइट्स जो हैं उन्हें नहीं दिए जा रहे थे, उन्हें वोटिंग राइट्स प्रोबेबली नहीं थे, वो कोई मतलब उनकी आज़ादी खत्म कर दी गई थी. सो अफ्रीकन्स, एज यू नो, मोस्टली जो मैं ब्लैक अफ्रीकन्स की बात कर रही हूँ. सो एबनी जो है डार्क ब्लैक कलर को बोलते हैं. एंड दिस ट्री इज नेटिव टू साउथ एशिया एंड अफ्रीका. कोई पर्टिकुलर ट्री है जो बिल्कुल ब्लैक कलर का है. तो यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर को एबनी के साथ जो है इन द फॉर्म ऑफ और वी कैन से इन द टर्म ऑफ एबनी बताया गया हुआ है. आपने नेल्सन मंडेला का नाम भी सुना होगा. नेल्सन मंडेला ने फिर ये जो है
माइनॉरिटीज जो वाइट थे उनसे उनको छुटकारा दिला के उनको वो राइट्स दिलवा दिए थे. सो ही हेल्प्ड देम इन देयर फ्रीडम. ओके, तो यहाँ पे राइटर ने उन अफ्रीकन्स का भी जिक्र किया हुआ है. सो ebony has been used to describe how human beings have been treated as slaves, with the land exploited for selfish motives. You might have seen, आपने recent years में देखा होगा, किसी न किसी मुल्क के बारे में सुना होगा, किसी कंट्री के बारे में, how people have been exiled from that place. You might have heard about Burma, वहाँ से लोगों को exile किया गया, बड़ी सारी कंट्रीज. तो उनके बहुत सारी एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे, आप सोचेंगे तो आपको देखने को मिलेंगी. सो with the land exploited for selfish motives, the bodies, hearts and soul of these poor and powerless people or any land can be trampled over. ट्रैम्पल क्या होता है? रौंद के चलना, यानी कि उनके राइट्स को ये गवर्नमेंट रौंद के चलती है. गवर्नमेंट समझती है ये हमारे गुलाम है और उनको रौंद के चलती है. सेम वे में राइटर ने क्या कहा है, उसने क्या कहा है कि इस तरह से जैसे येलो लीव्स स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड होते हैं, एनीवन कुड ट्रैम्पल देम आउट ऑफ शेप, उनको रौंद के चलते हैं. जब आप सूखे हुए येलो लीव्स को रौंद के चलोगे तो आउट ऑफ शेप, वो तो डी शेप हो जाएंगे, उनकी वो अपनी शेप में नहीं रहेंगे क्योंकि वो टूट जाते हैं. और जब वो टूट जाते हैं, हैव यू एवर हर्ड देयर वॉइस? बहुत कम बच्चों ने, आप सोचते होंगे आती है आपको वॉइस, बट वी डोंट नोटिस दैट. हमने देखा है क्रंच की सी आवाज थोड़ा सा, जिसको राइटर ने यहाँ पे कहा है सिंगल मोनोक प्रोटेस्ट, एंड वी रिमेन अनडिस्टर्ब बाय दैट प्रोटेस्ट. तो हल्की सी चरचराहट की आवाज जो आती, हम डिस्टर्ब नहीं होते. सो यहाँ पे भी राइटर ने ये बताने की कोशिश की है, नो डाउट दीज स्लेव्स, whether they are those black Africans, whether they belong to some Asian countries, ये स्लेव जो हैं ये अपनी आवाज उठाते हैं, ये they raise their voices against this tyranny, but their voices are being silenced by the forces and by the cruel kings. Okay, so we can say that they don't allow them to raise their voices. Governments don't allow them to raise their voices. Okay. Now let us go for the second stanza. The birds that herald dreams were exiled from their songs, each voice torn out of its throat. They dropped into the dust even before the hunter strung his bow. You can see the image of the birds when autumn approaches. You might have seen birds start migrating from Kashmir. You might have seen the pictures of birds migrating from valley to other parts of the world, to some warm lands, from Jammu. यहाँ से भी आपने देखा होगा, to some warm lands. वो birds जो है उनकी migration start होती है. Why? Because now autumn season doesn't suit them. It's cruel for them. It forces them for exile. उनको जला वतन होने पे मजबूर करता है. Because the season, the atmosphere here is not anymore suitable to them. It's not favorable to them. Okay? So the birds that herald dreams. Birds that herald dreams means? Herald means जो बोलते हैं, अनाउंस करते हैं, बताते हैं, फोरटेल, जो देखते हैं, ड्रीम्स, वो एक्साइल्ड फ्रॉम देयर सॉन्ग, उनको जलावतनी पे मजबूर किया जाता है. ईच वॉइस torn out of its throat, they dropped into the dust even before the hunger strung his bow. As they become colder and shorter during autumn season, many birds start their migration to warmer land. I have told you earlier this. And thus, one can no longer hear the sweet song of these birds during autumn.
However, the poet continuing with them, theme of violence, sorry, it's not them, it's theme of violence and cruelty, paints a vivid, moving picture of heartless person brutally ripping out the voices of the birds dropped dead to the ground. समझ आई आपको ये क्या बता रही हूं मैं? जितने जितने ऑटम के दिन आते जाते हैं उतना मौसम ठंडा होता जाता है और जैसे कि बर्ड्स को यहाँ पे सूट नहीं करता वो निकलते जाते हैं. यानी कि जितना जितना जुल्म बढ़ता जाता है, किसी कंट्री के लॉज अगेंस्ट दीज स्लेव्स आते जाते हैं, तो वो लोग जो हैं अपना कहीं और वो भी अपनी वॉइस रेज करते रहते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनकी आवाज साइलेंस की जाती है, उनकी आवाज उनके गले में ही दबा दी जाती है, छीन ली जाती है और ऐसे ऐसे जुल्म ढाए जाते हैं कि या तो वो मर जाते हैं और अगर नहीं मरते हैं उनको हमेशा के लिए खामोश करा दिया जाता है. ओके, सो सिमिलरली पोइट ने यहाँ पे कहा है violence and cruelty of the season continues. He paints a vivid moving picture of a heartless person brutally ripping out the voices, the vocal cords जो होते हैं birds के. Even though birds had been exiled, the person performs this mindless act of cruelty. अब बेचारे वो छोड़ देते हैं, एक्साइल्ड हो जाते हैं, जलावतन हो जाते हैं. इवन अगर वो लोग जेल, उनसे जेलें भर दी जाती हैं, इवन देन these people keep on making laws जो उनकी आवाजें हमेशा के लिए छीन लेती हैं. The person performs this mindless act of cruelty, not giving them chance or time to leave the land. Okay, I'm sorry for I have made probably some these typing errors. So please read it. Not giving them chance or time to leave the land. So here, birds can be also used as a metaphor for the people with dream for justice. Unfortunately, their voices for justice are being silenced by the cruel rulers and they are sent into the exile or jailed. O God of me, have mercy. Bless these withered bodies with your passion of resurrection. Make their dead veins flow of blood again. Give some tree the gift of green again. Let one bird sing. These are the last lines. You can see in these lines, poet invokes God of May to bless these withered bodies with your passion of resurrection. Okay, so God of May is being invoked. Resurrection means to rise from death. In other words, to come back to life. In these given lines, the poet now appeals to the merciful God or authority of the month of May to blow new life into the dried out, shrunken bodies of birds and the trees. So he invokes God of May, बुलाता है, यानी कि merciful को बुलाता है, God को बुलाता है, या उसे कहता है, उसे प्रे करता है कि एक नई जिंदगी, एक नई रूह फूंक दो इन विदर्ड बॉडीज में. विदर्ड बॉडीज यहाँ पे क्या है? ऑटम में तो ट्रीज हैं या ये बर्ड्स हैं, लेकिन अगर हम इस पॉइंट के सिंबोलिज्म को देखें तो दीज स्लेव्स who are being oppressed by these cruel kings, उनको बोल रहा है इन्हें एक नई हिम्मत, एक नया जोश दे दिया जाए, इनमें एक नई रूह फूंक दी जाए, to give them new life, to bless them with some new hope and motive. Shrunken bodies of birds and the trees so that they could come back to life. Autumn symbolizes the cycle of life of the month of April and May, or the dance
of hope. Autumn symbolizes the cycle of life. Okay, here I had to put full stop. I have told you earlier, so many typing errors are there. Then after full stop, the month of April and May are the times of hope, new growth and renewal. Okay. So before thanking you for watching the video, I must tell you that in the last verse, there is use of imagery of everything looking weathered in the autumn season. जब आप देख रहे हो लास्ट वर्स में best these withered bodies. Withered क्या होती है? सूखी हुई bodies. तो आपकी आंखों के सामने सारे सूखे हुए पेड़ आ रहे हैं. Okay, this is visual imagery. Okay, sound imagery has also been used in the poem. कहाँ पे poem में हुई है यूज? सिंगल मोन ऑफ प्रोटेस्ट. तो हमें क्रंच की सी आवाज होती है जब हम देखते हैं कि जब हम लीव्स के ऊपर चलते हैं. सो मेटाफर भी आपने देख लिया. देन यू विल आल्सो बी आस्क्ड किसके साथ ऑटम को कंपेयर किया गया है. सो वी कैन से पर्सोनिफिकेशन हैज बीन यूज्ड. ऑटम हैज बीन personified with a cruel king. So dear students, thanks for watching my video. Hope you will you have subscribed my channel and you will be getting notifications all over when the video will be uploaded. Okay.